if I am ideation startup, how should I look for funding? क्या process है इसका? How to overcome the fear of getting your idea copied by someone else? How many startups raised funding on ideation? What are the do's and don'ts you should keep in mind while pitching to an investor? Welcome founders to our Startup Bazaar Show. I personally receive 700 plus pitch decks every month, right? Few of them made to investors. तो उसमें दिक्कत क्या है कि उन 700 में से सिर्फ 50-60 ही जाती हैं. There are few problems in the pitch decks that founders don't know. So today we will discuss how to solve these problems and what are those, and like basically what are do's and don't in pitch deck and what is investor mindset. So basically we have invited our guest, a very special guest for the today's show. She is Khushbu Mehta, an investment analyst from Devex. So hello Khushbu, welcome to the Startup Bazaar Show. Hello Akash. First of all, thank you so much. आपने मुझे invite किया आपके show पे. And hello everyone who all are watching this. My name is Khushbu Mehta. As Akash introduced me, I'm an investment analyst from Devex. And also I'm a startup enthusiast. I write content on LinkedIn regarding startup and the startup ecosystem. You guys are free to watch that and comment on that. My journey started from 2019, where I was working with Time Mumbai as a marketing intern. So वहाँ से startup ecosystem के बारे में मुझे actually थोड़ा knowledge आना start हुआ. As my dad also is a startup advisor and consultant, तो हमारी घर पे startup and startup ecosystem के बारे में बहुत बातें चलती रहती थी. तो इससे I got an interest that really this industry is worth knowing. And इस industry में really क्या है ये जानना चाहिए. So I joined Time Mumbai. Over there I was with a marketing team. मैंने बहुत सारी events handle किए हैं, जैसे कि startup events हो गए, corporate events हो गए, time member mixer हो गया, charter member events हो गए, and one of the main events such as Tycoon Mumbai 2020, where I had the opportunity to meet Mr. Ratan Tata, Mr. Narayan Murthy, and some of the big people from the industry. And this was a very proud moment, and I can say this was one of the biggest achievement I have made till now in my entire lifetime. From there, after I completed my internship, I moved on with 100x.vc. It's again a venture capital firm because I wanted to go into that VC industry and explore. So वहाँ पे भी मैंने 6 months काम किया, and believe me, it was amazing. मुझे इतना सारा knowledge, इतना सारा learnings 100x से मिला है, and it was very fabulous. After that, again, after some time, I again joined a venture fund where I'm working currently, which is Devex. यहाँ पे भी 6 months मुझे होने आया है, and I have tremendously learned a lot. And एक आपका confidence boost up होता है when you meet people, when you talk with people, and आपके जो आप learnings करते हो, you get to know the entire ecosystem. ये जो startup ecosystem है, you get to know that in and out. When you talk with a startup founder, when you talk with an investor, आपको idea आती है कि really this industry is worth knowing. Right. Yes. तो बेसिकली जब मैं किसी एंजल इन्वेस्टर से वीसी से मिलता हूँ, तो मुझे भी एक ऐसी मोटिवेशन आती है कि राइट दिस इज द थिंग, इसलिए हम काम कर रहे हैं. इसका एक माइंडसेट ऐसा, एक सराउंडिंग ऐसा है कि हमें मोटिवेशन मिलती है, राइट, किसी भी काम को करने. Yes, definitely. Definitely. I completely agree with this. हाँ, एक there is a great saying कि अपने आप को उन लोगों से सराउंड कर लो जैसा आप बनना चाहते हो. And that's what I do in my life as well. मैं उन लोगों से साथ ही रहता हूँ. And it is rightly said that आपने ये जो बोला, you should surround yourself with people, and it is the saying that you should you become an average of 5 people you be with. So choose your people wisely. Right.
So let's start with the questions, Kushu. Should we start, right? Sure. Sure. So first question is, what is the mindset of an investor? Okay. So investors बहुत सारे हैं, बहुत सारे brains इसमें involved होते हैं. So there are various perspective and various mindset of an investor. But some of the most common things which I have observed is while pitching to the investors, what opportunity you bring on table. What is your business scalable enough? See, investors are someone, you know, जो ये बहुत टाइम से ये काम करते आ रहे हैं, and they particularly know how this industry works. So mindset थोड़ा सा different हो तो चलेगा, but they arrive at a very common point and they see some of the things which are quite common enough. And I want to highlight that points as I'm mentioning. So what opportunities you bring on table? Is your business scalable enough? And how big is the problem? Problem कितना बड़ा है? What problem are you trying to solve? Is it really worth enough? And at the end of the day, result matter करता है. At any while pitching to any investor, at the end of the day, results matter a lot. So investors को वो चाहिए particularly. And do you have any expertise around this? You know, आप अगर अपनी टीम के साथ कुछ काम कर रहे हो तो आपकी टीम में any expert है जो ये particular field को बराबर से जानता है? You personally yourself, do you know about this whole thing? So this is what it matters a lot, and this is a kind of investor mindset when you pitch in front of the investors. Definitely, जब भी किसी ideation startup की pitch होती है तो it is not about the idea just. Investor एक के founder के mindset पे invest करता है. What he's like, man, कैसा इंसान है वो, how he like, उसकी thinking क्या है, optimistic है, pessimistic है, right? What his nature is. So basically, but and it should be and it should be a problem solving thing. हाँ, definitely. Problem आप क्या solve कर रहे हो? It should matter a lot. Definitely. बाकी whenever I met to founders की वो बोलते हैं sir can I get funding on basis of idea, है ना? मैं उन्हें बोलता हूँ if you are serial entrepreneur, आपने पहले कुछ स्टार्टअप्स करे हुए हैं, सक्सेसफुल हैं, राइट, आपने उससे एग्जिट मार ली है, तब आपके चांसेस बढ़ जाते हैं फंडिंग लेने आइडिएशन पे. बट इफ यू आर न्यू कमर इन द इंडस्ट्री और आप आइडिएशन पे जा रहे हो, राइट, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है. So it's hard to gain trust from the investor कि हाँ मैं कुछ कर पाऊंगा. If you're already a well settled, like आपका ना अच्छा audience money fit तो है आसान, but in starting it's very challenging, right? So with this, there's a next question. How do they evaluate a particular startup? So evaluation बहुत सारी चीजों पे होती है, but when you are pitching for the first time to any investor, they look upon to your team first of all. कि team क्या है, आपकी टीम में कौन कौन है? Definitely. Are you a single founder? Are you having a co-founder? Right. So most probably क्या होता है, many investors do not invest in a single founder. They kind of want a co-founder or anyone from the team who really has the knowledge of it. So they really look to that. The second thing what they look across is what is your business model? आपका business model क्या है? What is that one USP, unique selling proposition? क्या आपके इसमें क्या USP है जो औरों से आपको differentiate करता है? Since I have talked to 100 plus investors, right, which is angel VCs, right? What I think every investor have their own thesis of investment. There is no constant plan, a simple set of rules. There is different rules for every investor. This is taste of theirs. Some invest in tech startups, some invest in some other startups, right?
some look in the team, वो देखते हैं कि इसकी स्किन कितनी है गेम में, इज ही ड्रॉप आउट बट ही डज फॉर द ना क्या Absolutely. क्या ये ये चीज मैंने अभी ही बोली कि टीम आपकी क्या है, आपका आपका मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है, मार्केट साइज क्या है, आप कौन से इंडस्ट्री को केटर करते हो, ओके, व्हाट इज दैट वन यूएसपी व्हाट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, and on the basis of this they kind of evaluate you, because see when you are an early stage आपके kind of pitch deck में these are some of the main important things जो आप put on करते हो. राइट, आपके पास थोड़ा बहुत traction हो गया, थोड़ा बहुत revenue हो गया, so रेवेन्यू, these are some of the things which they on the basis of that they kind of evaluate you. And see, one thing is very important, investors का ये day in and day out का business है, and they kind of understand कि आप मतलब एक मिनट में अगर आप इन्वेस्टर्स को ऐसे अपना आइडिया प्रेजेंट नहीं कर पाते, then the remaining time which you have is kind of waste. अगर वो first 1 or 2 minutes में you are not able to convince to the investors, then your remaining time is waste completely. And this is the fact and reality which I have seen across. Because वो लोग का ये business है, वो लोग ये करते रहते हैं, they have a very clear idea. basically yesterday I received around 30 or 40 files from a user, right? Okay. ने बोला मेरे पास आइडियाज हैं, आई वांट ना रेज फंडिंग, ओके यू सेंड इट, so he sent me, and each file have 30 or 40 pages each file. So I thought कि किसी भी इन्वेस्टर को ये भेजेंगे तो वो कैसे पढ़ेगा, राइट? तो I know. into short, right? ऐसा नहीं है कि इसकी लेंथ ज्यादा बड़ी हो जाए ना, just into like 5 or 6 pages or even 10, not more than that. इन्वेस्टर्स के पास ऐसा टाइम ही नहीं है. टाइम ही नहीं, अगर आप हाँ 40, 30, 40, 50 पेजेस का कुछ भेजते हो, he will not at all see that. वो देखेंगे ही नहीं, उनके पास ऐसा टाइम ही नहीं है. So that is why I told कि आप अगर अपने बिजनेस को 1 या 2 मिनट्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाते, then the remaining time is completely waste. वो सुनेंगे ही नहीं. It's a kind of that thing. Actually it's like ना first impression and the last impression, Last impression is the case, right? तो यहाँ पे आपकी first impression last impression बढ़ती है. तो everyone is listening, तो आप समझ लो कि first 10 or 20 seconds must be a full of curiosity. उसको सुन के ये लगेगा इसके आगे क्या होगा, राइट? इसके बाद क्या होगा, ऐसी स्टोरी यू गेट इनटू द पिच डेक कि यार बड़ी अच्छी स्टोरी है. स्टार्टअप आया खुशबू, इट वाज सो ग्रेट, राइट? कि मैं उनकी पिच डेक पढ़ने बैठा और मेरे को पता नहीं चला पिच डेक कब खत्म हो गई, राइट? इट वाज सो ग्रेट, वेल डिजाइन्ड एंड वेल थिंक ऑफ. उसका क्या था, दे वर बिल्डिंग अ हेल्थ टेक स्टार्टअप, राइट? with aim of watch, यहाँ पे उनकी वॉच थी, राइट? बेसिकली मेजर द हार्ट रेट एंड आपकी क्या क्या सिस्टम सब कुछ मेजर कर रहे थे. व्हाट दे स्टार्टेड विद, दे सेड कि देयर इज अ ओल्ड लेडी हु इज इन द लाइन इन द हॉस्पिटल, राइट? उन्होंने वहां पे उसकी पिक्चर लगाई हुई थी, राइट? तो उसके बाद क्या हुआ कि वो कह रहे कि उसके आगे अभी 50 पेशेंट हैं उस लेडी के आगे, तो एक को अगर 5 मिनट भी लग रहे हैं डॉक्टर को देखने के लिए, तो उनकी बारी देख लो कब आएगी, राइट? उस टाइम में क्या पता क्या हो जाए. तो वहां पे पहली स्लाइड पे ये लिखा हुआ था, बिल्ड क्यूरियोसिटी, उसकी बारी आएगी कि नहीं आएगी, वो उन्होंने क्यूरियोसिटी बना दी. देन नेक्स्ट स्लाइड पे, तो ऐसी इंडिया में बहुत सारी ओल्ड लेडीज हैं, ठीक है? हम इससे इसका सोल्यूशन कैसे निकाल रहे हैं कि उनको वेट ना करना पड़े. बेसिकली हमने एक वॉच बनाई है. डॉक्टर बेसिकली बट डॉक्टर डज इज कि वो एक तो टेम्परेचर चेक करता है, हार्ट रेट चेक करता है, उसमें उसको 5-6 मिनट लग जाते हैं किसी भी पेशेंट के लिए. तो वॉच सिर्फ 30 सेकंड में या 1 मिनट में पूरे का पूरा डाटा दे देगी, एंड उससे टाइम कम हो जाएगा. ओल्ड लेडी कैन गेट इन द लाइन फास्ट, उनको जल्द से जल्दी बारी आएगी उनकी ना. तो उन्होंने बड़ा सही सेटअप किया हुआ था, लाइक स्टोरी बेस्ड. ऐसी पिच डेक बहुत अच्छी रहती है किसी भी इन्वेस्टर के लिए. Yes, and I wanted to highlight one point here. आपने ये जो watch and इसका बोला. See, suppose when you are making things like this, accuracy, makes a lot of difference. Suppose आप heart rate अगर आप कर रहे हो वो watch में, आपकी technology में आप inbuilt कर रहे हो, so
आपकी मतलब वो एक्यूरेसी बराबर आ रही है? इज इट 99% एक्यूरेट? आपका जो डेटा दिखा रहा है वॉच में, इज इट एक्यूरेट? क्या आपने मतलब सही टेक्नोलॉजी यूज की है? बिकॉज सी जनरली वॉचेस में क्या होता है कि दे काइंड ऑफ सपोज मैंने ऐसे 2 राउंड चल लिए, तो वो हायर नंबर ऑफ स्टेप्स बताते हैं। इफ यू अंडरस्टैंड, अगर आपके पास एक स्मार्ट वॉच है एंड इफ यू आर गोइंग फॉर वॉकिंग, सो 2 किलोमीटर्स में आपके नियरली आई कैन से 5,000 to 6,000 स्टेप्स इजीली हो जाने चाहिए। बट देर आर सम वॉचेस जो एक्यूरेट डेटा नहीं बताते। दे काइंड ऑफ से दैट आपने इतने ही स्टेप्स किए हैं आज। एंड दिस थिंग आई हैव tried and tested with multiple watches. इसके लिए मुझे ये एग्जांपल याद आया कि मेरे पास एक ब्रांड की एक पर्टिकुलर वॉच है, वही सेम वॉच दूसरे ब्रांड की भी है, एंड आई हैव ऑल्सो अ थर्ड वॉच। तो तीनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो उसका डेटा सेम नहीं आता, अलग अलग आता है। So that is the reason why accuracy plays a most important role when you are building technology like this. आपका हार्ट रेट परसेंट एक्यूरेट आ रहा है। एंड वी आर इन द एरा कि अभी हमारी जो टेक्नोलॉजी वो डेवलपिंग फेज में है, राइट? इज नॉट डेवलप्ड राइट नाउ, so with we will definitely find accuracy, but the biggest point is just started and the people are starting in it. हम शुरू नहीं करेंगे तो खत्म कैसे करेंगे, right? Khushbu, there is another question which is what are the do's and don'ts you should keep in mind while pitching to an investor? Okay, so suppose there are many do's and don'ts, many things you should keep in mind before you are pitching to investors. First of all, you should be very confident enough. मतलब आप जो बोल रहे हो that should make sense. आप ऐसी भी लैंग्वेज मत यूज करो कि इन्वेस्टर्स को कुछ समझ में ही ना। Right. Use a very simple, sober language जो इन्वेस्टर्स को समझ पड़े, and they can ask you questions based on that. Okay. Do talk about your projections. आपके financial projections क्या है? आप next 6 months में, 1 year में, 3 years में, 5 years में आपका क्या business plan है? आपकी go to market strategy क्या है? Discuss these things which can give them a clear idea कि हाँ ये business अभी इतना है, आगे इतना बढ़ेगा और future में इतना बढ़ने के chances है। And फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन्वेस्टर्स को आपके जो भी रेवेन्यूज है, जो भी ट्रैक्शन आपने अभी तक गेन किया है, डू एड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट। अगर वो नहीं है देन टेल देम सिंपली नो दैट सिंस वी हैव जस्ट स्टार्टेड, वी डोंट हैव एनी कस्टमर्स येट, बट डोंट काइंड ऑफ हवा में बात मत करो कि हाँ मेरे पास इतने कस्टमर्स है, बिकॉज इन्वेस्टर्स आर समवन जो आगे जाके उनके तरफ से भी ड्यू डिलिजेंस या कुछ करेंगे। सो इट वुड क्रिएट अ वेरी रॉन्ग इम्प्रेशन कि आपने पिचिंग के टाइम पे तो ऐसा बोला था, देन व्हेन एक्चुअली में हम देख रहे हैं तो आपके पास कुछ है ही नहीं, देन व्हाई डिड यू से दैट आई हैव कस्टमर्स, आई हैव पेइंग कस्टमर्स, आई हैव मेनी कस्टमर्स इन माय हैंड। सो डोंट डू लाइक दैट। आपकी पिच जितनी हो सके ना उतनी शॉर्ट एंड क्रिस्प रखो। आप कॉन्स्टेंटली बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, डोंट डू लाइक दैट। मेक इट शॉर्ट, क्रिस्प, टू द पॉइंट, एड अ गुड स्टोरी लाइन, बिकॉज सी क्या है दैट इन्वेस्टर्स हियर hundreds 200 pitches each and every day. Okay, अगर 2 से 3 सिमिलर स्टार्टअप्स की पिच डेक उनके पास आई, how do they evaluate? Okay, how, on what basis do they evaluate, kind of thing? Right. So it's a storyline that matters a lot. आप कैसे अपनी स्टार्टअप पिच को स्टार्ट करते हो? आपने पहले वाले पॉइंट में भी बोला था मैंने एक पिच डेक देखी, उनकी स्टार्टिंग ही इतना ग्रेट था कि मुझे और इंटरेस्ट आया देखने। So just keep this keep this thing in mind. Coming to the don'ts part, first of all, there are many founders जिसको ना habit होती है that
पिच डेक में जो भी लिखा है, they just keep on reading and they do not explain कि इसका how really they are going to do that. They just simply keep on reading. Investors को भी पढ़ना आता है, they can also read things, but इसका असली में मतलब क्या है, आप कैसे इसको करने वाले हो. Okay, just explain them that thing. And don't be overconfident in front of investors कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी करूँगा, मैं 10 प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व करूँगा. No, never. एक प्रॉब्लम लो, एक को सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करो, फिर आपके जो रिमेनिंग 10 प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे आप सॉल्व करो. बट अभी फिलहाल क्या जरूरत है, किस प्रॉब्लम की आपको सॉल्व करने की जरूरत है, just do that. Third thing I would like to say is do not shy away from areas जो आपको नहीं पता. Okay? अगर आप कौन से भी वे में, सिंपल वे में अगर आपको उसका आंसर पता है, just try to explain it to them. अगर आपको नहीं पता है, then clearly say कि I would need to do some research on this and I will get back to you. Okay? And make sure you get back to them after that. Because आप कुछ भी बोल दो, it would create a very bad impression in front of the investors. Right. There are some points I think which are very relevant, and these points would definitely help you when you are pitching in front of the investors for the first time. So from this question, another question भी है कि how to like build confidence while pitching, right? But I say to founders कि your confidence is the result of your knowledge. अगर आपके पास नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में, आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट हो गए हैं. आप नर्वस तब होते हैं जब आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको डर लगता है कि कहीं ये कुछ ऐसा ना पूछ ले मुझे आता ना, राइट? तब हम नर्वस होते हैं. तो बेसिकली अगर आपके पास आपके स्टार्टअप के सेक्टर की सारी नॉलेज है कि इसकी ऑडियंस कैसी है, राइट, इसके कंपटीशन क्या है मेरे स्टार्टअप का, इसका रेवेन्यू क्या है, तो आपको डर कभी लगेगा ही नहीं, राइट? तो बेसिकली गेट एज मच नॉलेज एज यू कैन फॉर योर स्टार्टअप. तो वहाँ पे आपको बहुत फायदा होने वाला है, वहाँ पे आप कॉन्फिडेंट भी फील करोगे एंड एक एक्सपर्ट भी बन जाओगे अपने स्टार्टअप के. I think what you said is absolutely correct. But अगर आप स्टार्टअप की पिच डेक जो है वो आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे इन्वेस्टर्स के सामने बोलने से पहले, कुछ नहीं होने वाला आपको. आप फंबल ही हो जाओगे इन फ्रंट ऑफ द इन्वेस्टर्स. ओके, सो यू शुड कॉन्स्टेंटली कीप प्रैक्टिसिंग दैट. एंड जब भी आपको सैटिस्फाई हो कि या नाउ आई एम रेडी टू पिच इन फ्रंट ऑफ द इन्वेस्टर बराबर से, एंड आई एम रेडी टू आंसर as many questions as they ask, and जो अगर नहीं आए मैं वो रिसर्च करके बोल दूंगा क्या बोलना है. This is the kind of attitude you should keep in your mind. Definitely. बाकी एक है कि मिस्टेक्स हमारा नेचर ही है, एज ए ह्यूमन वी डू मिस्टेक्स. सो अगर आपसे कोई गलती हो जाती है ना, अनजाने में कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था, वो ठीक है, आप आगे बढ़ो, उससे होती है गलती, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां करी हैं, राइट? जस्ट मूव ऑन, राइट, टू द नेक्स्ट पिच. इन्वेस्टर ने मना बोल दिया, ये कारण कि उसको सुधारो, उसको लेके मत बैठो कि हाँ यार ये गलती नहीं करनी थी, अब तो हो गई. यू आर नॉट डॉक्टर स्ट्रेंज, आप पास्ट में जाओगे, टाइम स्टोन यूज करोगे, हो जाएगा. तो आगे बढ़ो, राइट? ऑब्वियसली. तो अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हिच इज व्हाट आर द क्वेश्चन दैट आई कैन एक्सपेक्ट एन इन्वेस्टर टू आस्क मी इन एन इनिशियल मीटिंग. So see, when you are initially at your early stage, आपके पास आपका बिजनेस मॉडल रेडी है, आपके पास आप कैसे रेवेन्यू जनरेट करने वाले हो या आप कैसे जनरेट रेवेन्यू करते हो. So questions on basis like what is your business model, what is your revenue model. अगर आपके पास already you are revenue generating, so what are your revenues for FY 2019, 2020, yeah, 2021, so on and so forth. Right. See, at the initial stage क्या होता है ना कि
फाउंडर के पास इतनी सारी डेटा अवेलेबल नहीं होती बिकॉज दे आर स्टार्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. So there are very minimal and basic questions you can expect from investors. कि आपकी team size क्या है? What is one USP that you're trying to solve? आपके target audience क्या क्या होंगे? Target market क्या क्या है? What are your plans for the next few months or few years? Strategy क्या है? So these are some of the common questions which you can expect from the investors. And one more thing, आप कितने का fundraise कर रहे हो? What is the valuation? What is the cap table? How does the cap table look like? Cap table in the sense कि कितना % आपके पास है, कितना आपने किसी और को दे रखा है, co-founder को दे रखा है, co-founder को दे रखा है, आपके पास कितना है, आपके पास पूरा 100% है या नहीं, अपने फैमिली मेंबर्स को कितना दिया है, who all are there in your business. Right. So these are some initial questions which you can expect in an early stage meeting with the investor.